welcome to Media Reporter. मेरा नाम नवप्रीत कौर है and आज ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਰਮਵੀਰ ਦਹੀਆ Mr. Dahiya is a Harvard graduate and ਇਹ own ਕਰਦੇ ਆ Dahiya Law Group which bankruptcy law firm ਹੈ. Mr. Dahiya, thank you very much for joining us today. Thank you. Mr. Dahiya, ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ foreclosure ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਇਹ foreclosure ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? Foreclosure चीज़ ये है कि आपका घर आपसे हाथ से निकल गया है. की प्रोसीजर किया प्रोसीजर ये है कि आपने बैंक से पैसे लिए घर खरीदने के लिए और आपने बैंक को पैसे नहीं दिए, तो बैंक क्या करता है, उसको नोटिस देता है और एक दिन फिक्स करता है घर को उसकी नीलामी लगाने के लिए घर को बेच दिया जाता है. तो अगर किसी को नोटिस मिलता है तो वो क्या करें? आई मीन बिसाइड्स लॉयर के पास जाने पर वो प्रोसीजर क्या है? भाई देखो, न्यूयॉर्क स्टेट का जुडिशियल फोरक्लोजर है. दो तरह के हैं, नॉन जुडिशियल फोरक्लोजर एंड जुडिशियल फोरक्लोजर. ओके. जुडिशियल फोरक्लोजर के अंदर यू हैव टू गो थ्रू द सुप्रीम कोर्ट. न्यूयॉर्क स्टेट में जैसे यू हैव टू गो टू द स्टेट कोर्ट्स एंड यू हैव टू फाइल अ पिटीशन देयर. यू हैव टू स्टार्ट अ लॉ सूट एज अ लेंडर. A lender has to start a lawsuit. Okay. And the notice is given, summons are given to the homeowner, he has to file a response. So जो foreclosure ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ summons ਮਿਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ lawsuit already ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ court ਵਿੱਚ? Yes. Okay. Summons means commencement of a lawsuit. दूसरा इसके मतलब ये है कि आपके खिलाफ जैसे आप $2,000 आपको हर महीने देने हैं बैंक को, आपने नहीं दिए जी, वो उस लोन को एक्सेलरेट करते हैं. वंस द एक्सेलरेशन स्टार्ट्स दे कैन डिमांड द एंटायर मनी एट वंस. ये एक्सेलरेशन क्या है? भाई एक्सेलरेशन ये है कि आपने $4 लाख लिए हैं बैंक से और आप नहीं दे पा रहे $2,000 महीने के हिसाब से, तो उसको डिफ़ॉल्ट कर देता है बैंक. जब बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो आपको नोटिस दिया जाता है, उसके बावजूद भी नहीं मानते आप, तो आपके खिलाफ एक एक्सेलरेशन नोटिस आता है कि आप सारा पैसा एकदम दो. ओके. सो अब एक बार वो लॉसूट हो गया, फाइल हो गया और आपको नोटिस मिल गया, आप कौन से एक्शंस ले सकते हैं आपका घर बचाने के लिए? भाई बहुत सारी चीज़ें हैं. आपने 1-2 साल से अगर मॉर्गेज नहीं दिया तो बैंक्रप्सी कर सकते हैं. चैप्टर 13 बैंक्रप्सी है जिसके अंदर आप यू कैन प्रपोज मेक अ पेमेंट प्लान, गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम द कोर्ट. सो चैप्टर 13 बैंक्रप्सी अगर हम कोई करता है वो आपके घर को बचा सकता है? Yes. वो घर लेट्स से कई लोगों के पास 1, 2, 3, 4 घर होते हैं, वो कितने चैप्टर 13 कौन से घर को बचाता है? भाई चैप्टर 13 सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसकी सिक्योर्ड डेट $1 मिलियन से कम हो और अनसिक्योर्ड डेट 3 लाख से कम हो. अगर आपके पास 4-5 घर हैं, न्यूयॉर्क में हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि आप चैप्टर 13 के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो आपको चैप्टर 11 करना पड़ेगा. चैप्टर 11 क्या फ़र्क है चैप्टर 11 और चैप्टर 13 में? चैप्टर 11 भाई बिजनेस लोग कोई भी कर सकता है. चैप्टर 11 चैप्टर 13 उन लोगों के लिए है जो स्ट्रिक्टली रेगुलर इनकम वाले हैं, जिसकी डेट लिमिट से कम है. ठीक है. हम बैंक्रप्सी के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे. लेट्स गो बैक टू द फोरक्लोजर्स. सो अगर ये तो आप कह रहे थे देयर इज डिफरेंट एरियाज, ठीक है ना, आप बैंक्रप्सी फाइल कर सकते हैं. कई लोगों के पास 1-2 मॉर्गेजेस होती हैं, वो और कौन सी रेमेडीज़ है अवेलेबल टू अ होम ओनर? भाई होम ओनर क्या है कि लोन मॉडिफिकेशन है और टॉक टू द बैंक, दे कैन रिस्ट्रक्चर. इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द बैंक. द बैंक कैन ऑलवेज रिस्ट्रक्चर इट. देखिए साहब, आप बैंक्रप्सी कितने साल और मॉर्गेजेस और बैंक्रप्सी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, आपने कोई कॉमन ट्रेंड देखा है ये क्यों ऑल ऑफ अ सडन कोई अपनी मॉर्गेज पेमेंट नहीं दे सकता बिसाइड्स नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड इट? आई मीन क्या होता है इन मॉर्गेजेस में कि एकदम कोई अभी पे नहीं कर सकता? भाई वो यही है कि आपको तकलीफ हो गई, आपके घर में कोई डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आन पड़ी है जिसकी वजह से आप मॉर्गेज पेमेंट नहीं कर पा रहे. ह्यूमन बीइंग्स की अलग अलग कंडीशंस हैं. यू नेवर नो व्हाट हैपेंस. फॉर्चून चेंज होता रहता है. पर वो भी सुना है कि प्रेडेटरी लोन्स भी बहुत हैं और हाई कॉस्ट लोन भी बहुत हैं जो इन प्रेडेटरी लोन्स क्या होते हैं? भाई प्रेडेटरी लोन्स ये हैं कि आप लोन देते हो किसी को, बंदे को, लेकिन वो ही क्वालिफाइड फॉर अ फिक्स गुड मॉर्गेज, लेकिन आपने उसको
आपने उस बंदे की परवाह नहीं करी, वो क्या दे सकता नहीं दे सकता, आपने उसके ऊपर थोप दिया है जी। आपने उसको फोर्स करके उसके यू मेड हिम साइन द कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रेडेटरी लेंडिंग कहते हैं उसको। ओके, तो प्रेडेटरी में क्या होता है? वो इंटरेस्ट रेट चेंज होता है? इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, एग्जॉर्बिटेंट है, आप अफोर्ड नहीं कर पाते, वो प्रेडेटरी लैंडिंग है जी। अगर जिसमें सिर्फ जो बंदा ब्रोकर है उसने पैसा बनाने के लिए ही गेव यू बैड लोन। वो क्या कर सकते हैं? आई मीन जो किसी ने बैड लोन दिया है तो ये लॉ, द लीगल सिस्टम कैसे हेल्प कर सकता है? लीगल सिस्टम की डिफरेंट रेमेडीज़ हैं, जैसे ब्रीच ऑफ फिड्यूशरी ड्यूटी है और हाई कॉस्ट लोन्स हैं, उसको बचाने के लिए दे सर्टन डिस्क्लोजर्स दैट नीड्स टू बी मेड। बहुत सारी लेयर्स हैं, दे हैव टू बी फॉलोड। सबसे अच्छा प्रोटेक्शन है द मैन हु इज़ डूइंग योर क्लोजिंग, ही इज़ द फर्स्ट, you know, what do you call the gatekeeper. He's supposed to be careful what it is before he lets the parties in, before he lets you sign a contract which you think you're going to be, which you don't know. You're going to have a tough time paying them back. So आपका ये recommendation है कि make sure कि जो आपका closing attorney है, make sure he knows what he's doing. Absolutely. Yeah, so it's welcome. So it थोड़ा सा basically फ़ायदा होता है थोड़े से extra पैसे spend करने to make sure that आपका जो attorney है वो आपके best interest में है, so it's better to spend a little bit than to spend less on a better attorney. Okay. Absolutely. वकील, अच्छा वकील रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा वकील एक रूख पर बैठे हुए व्यक्ति के समान होता है, वो उसको चारों दिशाओं का दिखता है, ही कैन सी ऑल फोर डायरेक्शंस। जो लॉ की, जो कॉन्ट्रैक्ट की हर पहलू, हर चीज़ को समझ पाए, वही अच्छा वकील है, जो अपने क्लाइंट की कैपेसिटी को देखे। Okay. वो ये हाई कॉस्ट लोन क्या होता है? भाई हाई कॉस्ट लोन ये गवर्नमेंट का फिक्स कुछ मॉर्गेजेस हैं, इस इंटरेस्ट रेट से कुछ ज़्यादा है तो वो हाई कॉस्ट लोन माना जाता है। सब प्राइम लैंडिंग का एक एस्पेक्ट है हाई कॉस्ट लोन। ये हाई कॉस्ट लोन कैसे पता लगता है कि आपको हाई कॉस्ट लोन है? भाई जैसे न्यूयॉर्क स्टेट में 2-3 रीज़न इसके, अगर आपका इंटरेस्ट रेट कुछ इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है जो फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट से, ऐसे अपने रिजर्व बैंक है, कोई लाइबोर है, उससे फॉर एग्ज़ाम्पल दे विल से अगर आपकी क्लोजिंग कॉस्ट अगर 5% से ज़्यादा आपकी क्लोजिंग कॉस्ट में पैसे लग गए हैं तो दैट्स अ हाई कॉस्ट लोन। सो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं एक घर खरीदना चाहती हूँ और वो बैंक कहता है कि मैं तुम्हें मॉर्गेज देती हूँ, ठीक है ना, और सब क्लोजिंग कॉस्ट तुम्हारे मॉर्गेज से चले जाएंगे और मैंने पॉकेट से कुछ नहीं डाला, क्या वो भी हाई कॉस्ट लोन हो सकता है? एब्सोल्युटली, वो भी बिल्कुल हाई कॉस्ट लोन हो सकता है क्योंकि आपने सब चीज़ों की फिनेंसिंग कराई है। जी। सब चीज़ों की अगर आप फिनेंसिंग कराते हो, सो द गवर्नमेंट दे सर्टन चीज़ें जो बैंक could have asked you to pay, but they are financing everything because they want to have a bigger amount, bigger principal. They wanted more money as an interest. So ऐसे लगता है कि सब कुछ फ्री है, but in reality ये फ्री नहीं है, कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है आज के समय ज़िंदगी में। जी। So वहाँ भी be careful रहना पड़ता है। Yes. So ये मैं सोच रही, मुझे सुना है कि sometimes अगर आपके घर में equity हो और आपने second, like for example some sort of line of credit खोलना होगा, do you have any sort of suggestions or some sort of recommendation to people on how to be careful with mortgaging their equity? You have to be very, very careful that the interest rate is not high. There's certain restrictions that apply. There's certain restrictions that apply when you purchase the home, but they don't apply when you're doing the equity refinancing. So it's basically very unscrupulous, and they usually gear and they kind of shepherdize you towards loans that are high cost loans. So you have to be careful with the terms. हम बात कर रहे हैं high cost, high interest. ये आपका क्या belief है, क्या है high interest? Given आज की economy and the mortgage market, what is considered a high interest rate? भैया अगर आप 4 या 5% से ज़्यादा लेते हैं, that will be considered high interest rate. Okay. It depending on the market. Whereas 7-8 years back, interest rate at 7 was considered very good, but now it is considered very high. Okay. So आपका क्या belief है कि ये interest rate यहाँ ही रहेगा और ये it's going to fluctuate, ऊपर जाएगा? Interest rate is going to go up. It depend करता है economy अगर अच्छी हो जाती है तो interest rate is going to go up. Okay.
ठीक है, चलो हम बैंक्रप्सी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं जी। बैंक्रप्सी क्या है? आई मीन सब जानते हैं अगर आपके पास डेट है, पर बैंक्रप्सी क्या करती है? भाई बैंक्रप्सी है, फेडरल रेगुलेशन है, फेडरल रिलीफ है। बैंक्रप्सी आपको हेल्प करती है टू डिस्चार्ज योर डेट्स। कौन से डेट्स? सारे डेट जो हैं, कंज्यूमर डेट्स हैं आपके, कमर्शियल डेट, कंज्यूमर डेट, सारे डेट्स को ये वाइप आउट करती है, कुछ डेट को छोड़ के, टैक्स को, चाइल्ड सपोर्ट को, क्रिमिनल रेस्टिट्यूशंस को छोड़ के। स्टूडेंट लोन है उसको ये डिस्चार्ज नहीं करती है। ये स्टूडेंट लोन्स मैंने देखा है बहुत सारे स्पेशली इंडियन के बच्चे जाते हैं मेड स्कूल, लॉ स्कूल, इन्हों के स्टूडेंट डेट्स बहुत होते हैं। ये स्टूडेंट डेट्स बैंक्रप्सी में कभी नहीं डिस्चार्ज हो सकते। ये अगर फेडरली सब्सिडाइज हैं, लाइक स्टैफर्ड लोन है, तो ये डिस्चार्ज नहीं होंगे। लेकिन इफ इट इज़ अ प्राइवेट लोन, दिस इज डिस्चार्जेबल। प्राइवेट लोन्स डिस्चार्जेबल हैं, Yes. फेडरल लोन्स नहीं। तो फेडरल लोन्स का भी कोई बिग हार्डशिप होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी। एब्सोल्युटली। वो कौन सी हार्डशिप है? वो हार्डशिप ये है कि यू शुड बी टोटली क्रिपल्ड दैट यू कांट पे। ओके, सो बेसिकली दैट द स्टूडेंट डेट हमेशा आपके साथ रहेगा। यस। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे कि वो बैंक्रप्सी, कौन सी चीज़ें बैंक्रप्सी में एग्जम्प्ट हैं? आई मीन हम बात कर रहे थे कि चैप्टर भाई जैसे आपके पास घर है तो आपको 150,000 अलाउड है, 10 एग्जाम्प्ट। कार की वैल्यू है 4,500 अलाउड है। सो मेरा अगर घर 3 लाख का है और मैं बैंक्रप्सी फाइल करती हूँ, सो मेरी एग्जाम्पशन ओनली हाफ ऑफ द हाउस। नहीं 150,000 है। ओके, अप टू $150,000। सो वो दूसरे $150,000 का क्या होता है? वो दे विल सेल द हाउस इन द बैंक्रप्सी प्रोसेस। सो फिर वो एग्जाम्पशन मुझे 150,000 मुझे। या यू विल गेट द कैश प्रोसीड 150,000। ओके, आई सी। सो ओके, आई अंडरस्टैंड। सो और कौन सी चीज़ें हैं गाड़ी के सिवा, घर के सिवा? गाड़ी है, there's certain things, tools हैं, your books, your clothing, there are a couple of things like the small miscellaneous items, or retirement accounts हैं. They are not retirement accounts, they don't become part of the estate. What about अगर आपको कोई पर्सनल इंजरी अवार्ड मिला हो, आपकी चोट लगी हो, और वो कौन सी? भाई न्यूयॉर्क स्टेट में तो 7,500 is allowed, but not more than this. Okay, I see. Yeah. तो हमने चैप्टर 13 और चैप्टर 11 के बारे में थोड़ा सा बात की थी। अगर और कोई बैंक्रप्सीज है वहाँ? चैप्टर 11 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 9 है म्यूनिसिपैलिटी के लिए, चैप्टर 12 है फार्मर्स के लिए। जी, तो जब आपके ऑफिस में कोई क्लाइंट आता है, आपको आप कैसे डिसाइड करते हैं कौन सी बैंक्रप्सी फाइल करनी है? डिपेंड करता है क्लाइंट्स की नीड क्या है। सर्टेन क्लाइंट्स दे वर अबाउट टू लूज देयर हाउस इन द मार्केट, सो वी डू चैप्टर 13 फॉर देम। Or some people have businesses, we do chapter 11 for them. And some people don't have anything to keep, retain. So they go in chapter liquidation. So let's say कि उन्होंने बैंक्रप्सी शुरू कर दी है, पर वो बिफोर बैंक्रप्सी डिस्चार्ज होती है पूरी, उन्हें कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं। लेट्स से उनके पास घर आ जाता है or something. Can they change the Of course, it's a very flexible, bankruptcy proceedings are very flexible. You can always change the chapter you're filing under. Okay. So अगर मैं बैंक्रप्सी फाइल करती हूँ, वो कौन से स्टेजेस हैं? I mean मुझे पता है लोग डरते हैं मैं बैंक्रप्सी फाइल कर रहा हूँ। क्या लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं when filing for bankruptcy? नहीं, there's nothing, I mean, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? It's depending on the situation is how to, unless you I think you should, I mean. मेरा मतलब कौन सी स्टेज, स्टेजेस क्या हैं वो बैंक्रप्सी? once bankruptcy petition has been filed, क्या वो स्टेजेस क्या है? आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको चिट्ठी मिलती है कोर्ट से कि इस डेट को आपको एक मीटिंग है, उसको कहते हैं मीटिंग क्रेडिटर्स, वहाँ आना पड़ेगा। तो आप उस दिन आते हैं वहाँ पर जी, और वहाँ पर जाकर अपना आईडी दिखाते हैं वकील को जो ट्रस्टी की हैसियत से काम करता है। जी, एंड यू दे आस्क यू क्वेश्चंस okay. आपके फाइनेंशियल वेयरविदाल के बारे में। या Okay, so once bankruptcy फाइल होती है और अगर सिंपल केस है, so in a few months वो bankruptcy discharge हो जाएगी। जी, okay. मैं एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जो अगर हस्बैंड एंड वाइफ ने प्रॉपर्टी, उनके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और ओनली एक स्पाउस, let's say husband wants to file for bankruptcy, ये वो वाइफ के कैसे अफेक्ट करेगा जो बैंक्रप्सी नहीं फाइल कर रहे हैं? नहीं, उसको कोई जो बैंक्रप्सी नहीं फाइल करता उसको कुछ नहीं असर नहीं होता है। So अगर वो हाउस कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, लेट्स से घर उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, वो जॉइंट प्रॉपर्टी है तो स्टे विल अप्लाई अगेंस्ट देम टू।
If there's a foreclosure proceeding, अगर husband file कर देता है bankruptcy, the benefit goes to the wife too. Okay. अगर नहीं कोई foreclosure proceeding थी, let's just say और कोई reason big husband के पास significant credit card debt था और इसीलिए उसने bankruptcy No, file. but that doesn't affect unless you're a joint credit card holder. Okay, I see. बहुत लोग की डरते हैं वो ना कि अगर मैंने bankruptcy file कर दी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा credit score ख़राब हो जाएगा. ये after आप bankruptcy file करते हैं, what can be expected आपके credit score से आपकी भाई no, it's a myth. Credit score, this is a hard hit. मैंने पहले ही बताया था ये hard hit है. लेकिन ये जो hard hit रहते हैं ये सिर्फ 3-4 महीने के लिए होता है. बाद में credit score goes up. There's no problem. पर ये कहते हैं कि bankruptcy तो आपके credit report पे 7-8 साल के लिए नहीं 10 साल के लिए judgment 10 साल के लिए रहता है, bankruptcy 10 साल के लिए रहती है. जी तो फिर भी आपका credit score ऊपर जाएगा. Yes. Why? क्यों ऐसा होता है? Well, this is going to go up because the debts are debt reduced हो गई हैं, debt are declared zero. It's going to go up because there's no burden on you anymore. जी. So अगर आप bankruptcy करते हैं, कई लोग also ये भी डरते हैं कि मैं life insurance agent हूँ, मैं stock broker हूँ, मैंने finance में काम करता हूँ और अगर मैंने bankruptcy file की मेरी job जा सकती है. क्या ये सच है? No, that's not true. Absolutely, this is like a lot of myths. People don't understand this. जी. There is absolutely, it does not have any negative impact on anything. किसी चीज़ के ऊपर कोई इसका असर नहीं है. You can continue to keep your license. Everything is fine. Okay. So अगर कोई fire होता है because उन्होंने bankruptcy file की है, it's wrong basically. Absolutely. You cannot discriminate against a person just because someone has filed for bankruptcy. You can't do that. क्या husband and wife इकट्ठे bankruptcy के लिए file कर सकते हैं? Absolutely. Okay, so is there some अगर husband and wife इकट्ठे हैं और वो decide कर रहे हैं कि हम एक bankruptcy file करेंगे और दो, उसमें कोई benefit है इकट्ठे? कोई benefit, the only benefit you have is basically भाई उसको double fees नहीं देनी पड़ेगी. That's all. That's it. Okay. Yeah. Okay. So कौन bankruptcy file कर सकता है? कोई भी इंसान bankruptcy इस country में कोई भी कर सकता है. So I mean हमारी community में unfortunately बहुत से ज़्यादा लोग हैं जिनके पास green card नहीं है, वो यहाँ illegally हैं. A lot of people have this myth कि ये सोचते हैं अगर green card नहीं है तो you can't file for bankruptcy, but that thing has no relationship. तो वो अगर वो bankruptcy file करते हैं कि कोई उनके immigration status पे कोई effect हो सकता है? No. Okay. So वो कैसे file करेंगे अगर उनके पास social security number नहीं है कईयों के? Well, they can always file it. I mean, just file it. Tell them you don't have social security number. Okay. All right. और आप कौन सा कोई advice दे सकते हैं आपके viewers को जो देख रहे हैं? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी you should not shy from utilizing the bankruptcy relief. It's a great weapon given by our government, and United States is a very productive society. It's a very powerful community, and you should protect the interests of the society, and society is going to protect your interest. You should try your best to pay in time, and if you can't pay, you should accept. I mean, it's an acceptance of responsibility. There is no stigma to it. You're just being honest. जी. It's better to flame once than to smoke forever. That's what I personally feel about it. Well, मेरा question अब ये है, अगर मैंने किसी ने bankruptcy file की है, कितनी बार कोई bankruptcy file? By bankruptcy, you can file after 8 years, every 8th year. Okay. But you can always file Chapter 13 or Chapter 11 before seeking Chapter 7. So bankruptcy हर एक chapter का different rules Absolutely. and regulations हैं. Chapter 13 के लिए 4 साल है, Chapter 7 के लिए 8 साल है. Okay, so it थोड़ा सा complicated system है. Absolutely, it is complicated, but there's a reason behind it. In Chapter 13 is you basically restructure, you're giving them a chance to pay back. That's why Chapter 13 is given you can frequently avail Chapter 13. Chapter 7, on the other hand, is you're not paying anything back. That's the reason why government has put a moratorium on this. उनका थोड़ा सा block कर दिया इसको. So
just because आपने bankruptcy file की है, इसका ये नहीं मतलब कि आपने stop payment करनी है, कि आपको फिर भी pay करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, जो कुछ जैसे मॉर्गेजेस हैं, उससे अगर घर रखना चाहते हो, जो भी है, जो चीज़ रखना चाहते हो पे करनी पड़ेगी आपको। मैं अब सुनती हूँ बहुत के लोग कहते हैं मैंने bankruptcy file की है और मैंने trustee को पे करना। Actually, before you answer that question, ये trustee कौन है? भाई ट्रस्टी एक वकील है मेरी तरह, जो पार्ट टाइम काम करता है, गवर्नमेंट की हेल्प करता है। वो ट्रस्टी कैसे हेल्प करता है? वो एडमिनिस्टर करता है केस को, केस के कागजात वगैरह देखता है। अगर कोई केस मेड आउट है तो मार्शल्स द एसेट्स, बेसिकली ही इज असिस्टिंग। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि इट्स हिज रिस्पांसिबिलिटी टू देखना कि आपके कौन से एसेट्स हैं। यस। सो मैंने आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर लेट्स जस्ट से हमारी कम्युनिटी, स्पेशली इंडियन कम्युनिटी में, हम कई बार अपने माँ बाप का नाम दे देते हैं घर पे, ठीक है ना, उसका, पर उनको वो नहीं पेमेंट देते, क्या वो भी इंक्लूड हो सकता है उनकी? एब्सोल्युटली, यू हैव टू से दैट, बट ट्रस्टीज के जरूर अटैक करेगा, बट योर डिफेंस इज दैट माय फादर और मदर हैड बेयर लीगल टाइटल एंड देयर इज नथिंग मोर टू इट। सो अगर मैं अपनी घर खरीदती हूँ, मैं अपनी माम का नाम डीड पर लिखती हूँ, मुझे ये नहीं फिक्र होगी कि अगर मैंने बैंक्रप्सी फाइल करनी है, वो मे बी वो अटैक तो ज़रूर करेंगे, पर चांसेस आर कि फिर भी मेरी वो घर। Well, if you're honest, they will prevail on that. You tell them it's a bare legal title holder that does not become property of the estate. सो एक्चुअली सिर्फ मेरी मॉम बैंक्रप्सी फाइल करती है, सो वो मुझे मेरे घर को नहीं अफेक्ट करेगा, बिकॉज उनको एक्चुअली उनको बेयर लीगल टाइटल है। Absolutely. सो yes. ये बेयर लीगल टाइटल क्या मतलब है? हाउ डू यू ऑब्टेन बेयर लीगल टाइटल? इज दैट आपने कोई डाउन पेमेंट नहीं करी किसी चीज के लिए, एंड योर जस्ट योर नेम इज ओनली ऑन द टाइटल। सो आप टैक्स एग्जेम्पशन नहीं लेते, मॉर्गेज पेमेंट एग्जेम्पशन? Exactly, well, that's an evidence to support your position. Okay, so it's very important to show कि आपने mortgage payments मेरी mom ने नहीं देती, वो it doesn't, so just to show that उनका कोई interest नहीं है। Absolutely. Okay. That's the way it is. Mortgage की पेमेंट आपकी तरफ से नहीं गई है, डाउन पेमेंट आपकी तरफ से नहीं गई है, और कोई इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से नहीं है, so that shows you're just a bare legal title holder. That's very interesting. So there's बहुत सारी चीज़ें हैं जो complicated हैं, but this is a learning process, and It is complicated. You must the every person जो घर के ओनर हैं, उनको बहुत ज़रूरी है एक अच्छे वकील से अपना सलाह लें और सोच के स्टेप उठाएं। जी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, नहीं तो कल को अगर आप फाइल करते हैं बैंक्रप्सी, अगर आपने ढंग से नहीं की, आपकी you might lose your house, you might lose your property. A lot of people make this mistake. So They go to these फॉर्म भरने वाले लोग चले जाते हैं उनके पास, चलो इस चीप में वकील नहीं है, इसके पास चला जाता हूँ, but that's not going to help you much. So जो कई लोग खुद अपनी bankruptcy फाइल करते हैं, do you have any advice for those people? मेरी कोई एडवाइस नहीं है bankruptcy में. I mean, this is like, it risky? I mean, it is very risky. You have to be very, very careful. Okay. You have to be very careful. So, I mean, कौन सी mistakes and what are some of the common mistakes जो लोग make करते हैं जब filing for bankruptcy? कौन सी mistake है? I mean, any common mistakes? Yeah, the mistake they do is for example, they transferred the house to someone within 6 years. Okay. They transferred some money within 6 years. That is a fraudulent transfer. Yeah. So अगर मेरे बैंक में $20,000 हैं और मुझे पता है मैंने बैंक्रप्सी फाइल करनी है और मैं अपने पैसे अपनी मॉम को दे देती हूँ within 6 साल, आप कहते थे? Yes, 6 years. Yes. So वो पैसे वो मेरी मॉम से वापस ले लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे. पर what if मैंने उनको एक लोन ओ करना था? Well, that's different, but that becomes property of the estate. Okay. That they will sue her to give the money back. और अगर उनको लोन देना था, then it's different. वो आपने लोन लिया था, लोन वापस किया है. Yes. And speaking of loans, आप देखते हैं कि especially family members में loans बहुत होते हैं, ठीक है ना? वहाँ those loans, especially to family members, are very scrutinized. I mean. Well, so this is an insider stuff. I mean, it's an insider transaction. The idea is that they want to see that you are filing for bankruptcy. You're an honest person. You're not hiding, transacting money anywhere. Right. Yeah. Okay. That's all what it is. So, just in general, obtaining loans from family members,
Yeah. You know, especially माँ बाप, you know, भाई बहन एक दूसरे को बहुत सारे, you know, लोन दे देते हैं. Here's $50,000, you know, मुझे कभी भी दे देना, ठीक है ना? वो कौन सा advice आप देंगे? You know, हम कहते हैं कोई नहीं. Keep your transactions clean and clear, and you just be honest about it, and that's all. Transparency is very important. That's all. So अगर कोई interest rate नहीं कोई charge करता loan में, वो भी फिर भी एक loan माना जाएगा? बिल्कुल, that's a loan, yeah. Okay, so but as long as आपकी recommendation है कि put it in writing, you know, make sure it's clean or सब कुछ documented है. Absolutely. Okay. और कोई advice देना चाहेंगे? My advice ये नहीं, you have to be very honest and you have to disclose. You have to have proper disclosure about everything. You can't conceal, you can't play smart. You have to be careful. Your lenders knows more about you than your own relatives or you about your own self. Right. So you have to be careful with that. That's the biggest advice that I can give. And you should always seek help of a professional before you seek bankruptcy protection, because there could be certain transactions जिसका meaning आप समझ नहीं पाते, but you have to be, you know, you have to know. And the only way you can know is by getting an advice from a competent person. Well, thank you so much, Mr. Dahiya. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. आपने बहुत सारे questions हमारे लिए answer किए. Thank you very much. मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बुलाया है. No problem. Thank you. Thank you very much. My name is Navpreet Kaur, and thank you for joining us today. Thank you. No, मैं सो गया था पीछे. मैं सो गया था बीच में, नींद आ गई.